everyone, welcome back to my channel. This is Ankita and you are watching Chronicles of Ankita. Those who don't know, I am an MBA graduate from IIT ISM Dhanbad and currently I am working as a marketing manager at a manufacturing firm in Delhi NCR. So since I have been into IIT ISM Dhanbad, every year before and after CAT, I get numerous queries regarding MBA at IIT ISM, the admission process, campus life, course curriculum, and most importantly, placements. And I get that, okay? Because when I was going into IIT ISM, मैंने बहुत ढूंढा था, मुझे भी ये सब क्वेरीज थी कि प्लेसमेंट कैसा होता है, कैंपस लाइफ कैसा होता है, कौन से कोर्स रहते हैं, कौन से स्किल्स होने चाहिए. बट मुझे उतना कुछ मिला नहीं था. यूट्यूब पे भी मैंने ढूंढा था, हॉस्टल्स एंड ऑल, कुछ भी नहीं मिला था. MBA के लिए, बीटेक वालों के लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बट MBA में से कभी किसी ने कुछ वीडियोज़ बनाया ही नहीं है. So I thought I will start making videos on MBA live at IIT ISM Dhanbad. So if you go through my channel, you will find videos on first year girls hostel, second year girls hostel, campus life, fests and all, everything. So if you want, you can check those out. Anyway, back to topic. So I decided कि I will cover all the queries in a video, and that's why I put up a LinkedIn post and the reaction was overwhelming. So I will cover all the topics. We will go chronologically. First the admission process, then the course curriculum, campus life, summer internship, and finally placement. Also I will share my experience also. So without any further ado, let's get started. Start with a bit of introduction about the management studies of IIT ISM Dhanbad, and is it worth to do an MBA from IIT instead of IIMs or B schools. So people have different point of views, but I have a few factors जिससे मुझे लगता है कि this factor can decide if you should do MBA from IITs. The first and most important is the IIT tag. For our engineers, the IITs have a very soft corner. Okay, every engineer wanted to become an IITian. So if you get a chance for doing a master in IIT, let's go for it. Second, the financial factor. The fees to do an MBA from IIMs are very expensive. Okay, they start from 25 lakhs onwards. बट कंपेरेटिवली IIT में ये फीस कम होता है एंड विद इन 10 lakhs के अंदर होता है. स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट IIT ISM Dhanbad, द फीस फॉर 2 years is within the range of 3.5 to 5 lakhs, and if you are, and this is for general, and if you are from reserve category, you don't have to pay the tuition fee, which is 75 to 80k per semester. Okay, so for reserve students it is way cheaper. And third, if you don't want to waste time, if you have converted an IIT this year and you are thinking, okay, I may take another chance, but I don't know if I will be able to make it or not. So if you are confused like that, you can go for the IIT. So let me tell you a story about one of my batchmates in MBA. He took admission in IIT ISM Dhanbad, but he wanted to go into IIMs. Total first year he studied, he attempted CAT again, and then he converted IIT Bombay. Then he took admission in IIT Bombay, and from IIT Dhanbad he got the diploma degree for completing 1 year of MBA with a good CGPA. Okay, so these are the things. You can decide whether you should do an MBA from IIT. Now a little bit introduction of IIT ISM Dhanbad. So IIT ISM started their Department of Industrial Engineering and Management in 1976. That time they used to offer MTech degree. After 20 years they started to offer MBA degree. That time it was Indian School of Mines only. So okay, so in 2016 it became IIT, and in 2020 they started to offer MBA in Business Analytics, which made it one of the few institutes to offer this course.
So that is all about the introduction of IIT ISM Dhanbad, and now we'll talk about the admission process. So the admission process in IIT ISM Dhanbad is like any other B school in India. First, you need to write CAT and you have to get a valid CAT result. Okay. Some people have asked me to talk to my institute and get them admission. Like, this is ridiculous. Okay. You need to write CAT at least, and you need to have a CAT result. Okay. With the CAT score, you have to apply through their online portal, and then they will call for an personal interview. सो ये जो पर्सनल इंटरव्यू है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होती है. हमारे टाइम में क्योंकि कोविड सिचुएशन था तो आई गेव द इंटरव्यू इन ऑनलाइन मोड ओनली. बट उसके बाद जब हम लोग कैंपस में थे तो मैंने देखा था कि उधर ऑफलाइन इंटरव्यूज भी चल रहे थे एज वेल एज ऑनलाइन इंटरव्यूज भी चल रहे थे. सो आफ्टर द PI वो लोग जो सारे स्कोर्स होते हैं उसको टोटल करते हैं. उसमें कुछ परसेंटेज रहता है कैट स्कोर का, कुछ परसेंटेज रहता है PI परफॉर्मेंस का, एंड कुछ रहता है योर एकेडमिक हिस्ट्री. 10th 12th ग्रेजुएशन में जो स्कोर होता है उसका कुछ पोर्शन लेके वो लोग एक स्कोर बनाते हैं और उस हिसाब से ऑलमोस्ट 200 to 250 स्टूडेंट्स का एक मेरिट लिस्ट रिलीज होता है उनके वेबसाइट पे. And from that, for your information, we have 92 seats, 62 for MBA core and 30 for MBA business analytics. Okay, so the first 92 students, they roll out the offer letters and they gave a time limit कि इस time के अंदर you have to pay and book your seat. If you don't pay, the seat will go to the next student. So obviously first 92 में maximum time seat full नहीं होते हैं क्योंकि people have other options. They choose institutes on their convenient. Okay, whichever is convenient for them. तो उसके बाद जो सीट वेकेंट रह जाती है उसके लिए वो लोग नेक्स्ट राउंड पे जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ऑफर लेटर भेजते हैं, और रिजर्व जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए अलग से एक लिस्ट आती है जो SC ST कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए. ओके, सो आई थिंक आई कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस कैसे एडमिशन होता है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कट ऑफ. देयर इज नो कट ऑफ. सेक्शनल कट ऑफ तो है ही नहीं, और ऐसे भी अप्लाई करने के लिए कोई कट ऑफ नहीं होता है. एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द कट ऑफ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द प्रोसेस. इस प्रोसेस के हिसाब से जिस ईयर जैसा डिमांड रहेगा, जैसे स्टूडेंट्स वो लिस्ट में ऊपर जो फर्स्ट 50% स्टूडेंट या फर्स्ट 10% स्टूडेंट वॉट एवर, जो लोग जिस हिसाब से एडमिशन लेंगे, जितना डिमांड रहेगा IIT ISM का उस हिसाब से वो कट ऑफ नीचे जाती है. क्योंकि मैंने अपने बैच में एक डाइवर्स परसेंटाइल देखा था. देयर वेर पीपल लाइक 93 परसेंटाइल एंड देयर वेर पीपल लाइक 50 परसेंटाइल. जो लोग मुझे पूछते हैं कि कट ऑफ क्या होता है, कोई कट ऑफ नहीं होता है. हाँ, आई कैन टेल यू अ सेफ कट ऑफ. इफ यू हैव 75 to 80, तो देयर इज अ फेयर चांस कि यू कैन कन्वर्ट IIT ISM, बट अगेन वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट. इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट वाज आई आस्क्ड ड्यूरिंग माय पर्सनल इंटरव्यू. ओके, तो मेरे जो पैनलिस्ट थे वो 2 सर थे एंड उन्होंने मुझे वैसा कुछ तो पूछा नहीं था, टेक्निकल क्वेश्चन और मतलब बीटेक से कुछ पूछा नहीं था. उन्होंने मैक्सिमम ही एज ए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे. ऐसा लाइक मैं ऐसे एज एन एग्जांपल बोल सकती हूँ. उनका जैसे क्वेश्चन था कि और कौन से इंस्टीट्यूट से कॉल आया है इंटरव्यू के लिए, और हैव यू गिवन एनी इंटरव्यू टू अदर इंस्टीट्यूट्स. तो मैंने उसका ऑनेस्ट आंसर दिया था कि हाँ मैंने और भी कॉलेजेस में दिए हैं इंटरव्यू. देन उनका क्वेश्चन था कि फॉर एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन जस्ट इमेजिन दैट यू हैव गॉट द ऑफर फ्रॉम IIT ISM एंड with that and this specific college, what will you do? So being honest, I answered them which answer would have fair chance that they will like. Okay, so you can understand. So मैंने थोड़ा ऐसे घुमा फिरा के आंसर दिया था and they actually quite like the answer. And also उन्होंने पूछा था कि why I didn't apply for MBA BA. ओके, सो ये सारे क्वेश्चन मुझे याद है जो मुझे पूछे थे. मुझे ऐसा कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछा नहीं था एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर पैनल. ओके, सो इट इज़ ऑल लक. कुछों को बहुत कुछ पूछा गया था. लास्ट ईयर एक्चुअली मैं Q2 वीडियो देख रही थी जहाँ पे एक लड़की PI का एक्सपीरियंस उसने शेयर किया था यूट्यूब पे.
तो उस पे मैंने देखा उसको बहुत सारे ही टेक्निकल क्वेश्चंस किए गए थे एंड इनफैक्ट उसको कुछ MBA पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस किए गए थे. सो ऑब्वियसली इट इज़ अप टू द पैनल अच्छा मिल गया तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ easy questions. And yes, if there are strict panel, you will get technical questions. You and that panelist, if are from the same background, you actually get that they will ask you from your background only. Now let's come to the course curriculum. वैसे तो it is there in their website, but just let me give you a brief about it. So there are two different departments, MBA core and MBA BA. फर्स्ट ईयर में करिकुलम इज़ क्वाइट सेम. सबको सब कुछ पढ़ना होता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, HR, इवन बिजनेस एनालिटिक्स. हमारे लैब्स रहते थे एनालिटिक्स के, और फिर कुछ सिमुलेशन लैब भी रहते थे, सॉफ्टवेयर लैब्स रहते थे. उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर से हम लोग एनालिसिस करते थे. ऑपरेशंस का हो गया, बाकी सबका हो गया, फाइनेंशियल मॉडल बनाना, ये सब रहता था. उसके बाद सेकेंड ईयर में जाके जिसको जिसको जिस हिसाब से स्पेशलाइजेशन लेना है उस हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट करते थे. इधर ये मेन बात है, IIM की जैसे इधर PGDM डिग्री नहीं होती है, सो वी डोंट हैव एनी स्पेशलाइजेशन. हमारे डिग्री में कोई भी स्पेशलाइजेशन लिखा नहीं होता है. ओके, इट इज़ जस्ट ओनली मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड ईयर में जाके कोई भी कुछ भी इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से. जैसे मेरे कुछ मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स थे, कुछ फाइनेंस के सब्जेक्ट्स थे एंड कुछ HR के सब्जेक्ट्स थे. ओके, सो जो सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं उसको हम अपने हिसाब से मेजर एंड माइनर ऐसा बोल देते हैं, बट ऐसा कुछ ऑफिशियली लिखा नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता है. ठीक है, यू हैव टू चूज सब्जेक्ट्स एज पर योर इंटरेस्ट. ये वालों का जो होता है फर्स्ट सेम सेकेंड सेम के बाद थर्ड सेम उनका पूरा ऑफ रहता है, जिसमें उनको इंटर्नशिप करनी पड़ती है. और कोर वालों को बस जो सेकेंड सेम और थर्ड सेम के बीच की जो 2 मंथ्स की गैप रहती है उसमें उनको इंटर्नशिप करना पड़ता है. BA वालों के लिए इंटर्नशिप मैंडेटरी है क्योंकि उनको उसका फिर रिपोर्ट बनाना पड़ता है, और कोर वालों के लिए उतना मैंडेटरी है नहीं. दे कैन डू फॉर देयर ओन गुड. सेकेंड ईयर में रहता है थीसिस. MBA BA वालों को एक सेमेस्टर मिलता है वो थीसिस कंप्लीट करने के लिए, जो कि होता है वो थर्ड सेम. सो उस थर्ड सेम में वो लोग इंटर्नशिप करते हैं एंड लास्ट में आते हैं कैंपस में जस्ट टू प्रेजेंट द थीसिस. ओके, बाकी टाइम उनको कैंपस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. और MBA वाले सेकेंड ईयर वो लोग वो थीसिस करते हैं. थर्ड सेम में वो लोग उसका प्रपोजल ये सब करते हैं, और फोर्थ सेम में जाके वो लोग फाइनल प्रेजेंटेशन देते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर्स करिकुलम. बाकी कौन से कोर्स होते हैं, आई कैन नॉट लिस्ट ऑल ऑफ देम. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो विच कोर्सेज आर ऑफर्ड, you can check out their website. I will put up the link in the description, so from that you can get the courses offered. Now we will talk about one of the most important topics, which is summer internship. So I have already said that MBA BA people have to do a 6 months internship, and MBA core guys can do 2 months of internship. So for MBA BA it is mandatory, and for MBA core it is not that mandatory, but people always do the internship for their own good, for their own exposure. Okay, so here I will suggest that don't sit and wait for the institute to bring companies, because institute don't give that much of importance to summer internship for core people basically. ओके, सो हमारे लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ आई थे, लाइक बहुत ही कम. हम मैक्सिमम लोग खुद से ढूंढ लिए थे, एंड आई विल सजेस्ट द सेम टू कि यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द इंटर्नशिप फ्रॉम द फर्स्ट सेम ऑफ योर MBA, so that you can get bunch of options while doing the internships, and you get which is good for your experience and which is good for your future. Okay, for MBA BA also you have 6 months. So again I will say, don't expect that college will bring great opportunities. College don't. In these IITs we have placement cells and we have career development cell. The TPCs are for the individual departments, and all are student driven. Okay, so students reach out to the companies, students try to convert. So depending on the team, depending on how hard the students are working, the companies will come. Like for us,
there were very less opportunity for summer internship, but our batch worked hard and they actually converted few companies which came for final placement and convinced them to take few students from our junior batch for their summer internship as well. The committees play a good role in summer internship as well as the final placement. I will talk about it later again. So now the most important topic, which is final placement. So if I talk about our batch, the highest package was 12 or 14 LPA and lowest was 7 with the average of 9 to 11 LPA. ठीक है, ये था हमारा रेंज और इसके लिए आई डोंट ब्लेम द कॉलेज बिकॉज एट आवर टाइम द रिसेशन वॉज गोइंग ऑन एंड मेनी कंपनीज फ्रीज्ड देयर हायरिंग बिकॉज हमारे जो सीनियर बैचेस थे उनके बहुत अच्छे नंबर्स थे प्लेसमेंट में and one of them got into Morgan Stanley with 30 LPA and there are they offered CTCs like 16 LPA, 18 LPA, etc. with an average of 12 to 13 LPA. ओके सो हमारे टाइम से एंड हमारे जूनियर बैच के साथ भी अभी फिलहाल तो ऐसा चल रहा है. व्हेन द रिसेशन विल गो अवे things will get changed and of course I have already said the team is very important, the committee is very important. It depends how the team is convincing companies and also you have to have skills, right? For MBA companies, the skills the company require, you need to have those skills. So yeah, there is nothing much to say about placements. I have given you the numbers and if you want you can check the LinkedIn page of Department of Management Studies, Indian Institute of Technology, Dhanbad, and you will get the brochure and you will get the placement stats as well. So now let's talk about some exciting topics, which is campus life or MBA at IIT ISM Dhanbad. The campus life is vibrant, MBA life is hectic, but at the same time you will get the vibe of an IIT. Okay, so there are various clubs, committees in the department. In our department there is placement committee, public relations committee and alumni relations committee. There are few clubs as well, which is analytics club, consulting club, igniters club and cultural club Rachna, which actually we founded. Okay, we started the club and now I am seeing that there are so many members and our juniors are taking those clubs so well. They are organizing events and all. So apart from that, there are fests. Hostels, I have shared the videos of hostels first year and second year, but it keeps changing. Generally, usually we get double shirt, but my junior to junior batch, like who are currently in the first year, I am talking about the particularly for the girls, they got 3-seater rooms actually. Anyway, the in time for the hostels are 12 am for both boys and girls, but for girls it is a bit stricter. They will let you in till 12:15, but the guys, they are very lenient as far as I know. Okay, and there is also in time to get into the campus as well. So after 10 you can't get into the campus, so the in time for campus is 10 and for hostel it is 12, and during the fest it gets extended and it became 1 or 2. After you get into the campus, there are orientation and then the recruitment for the clubs and committees started. They are also very interesting. They will give you tasks, you have to do that within 1 or 2 days, and then they will call you for a personal interview and then you will get selected. You will be posted on the social media and everything. So the whole MBA life is fun yet hectic. You will be given quizzes after quizzes, then it will come mid-sem, and before you get over from the mid-sem it will come for the end-sem, and then you will get into the next semester. So yeah, this is all about the campus life. I have shared videos about that, you can check those out on my channel. We have come at the very last part of this video, which is my experience and my review of IIT ISM Dhanbad. So I would say my experience was amazing. From a tier 3 college to IIT, it was overwhelming. I have lived the IIT life
with crazy DJ nights, concerts, parties, etc. And at the same time, I have aced my all academic tests, quizzes, etc. and got a good CGPA, maintained it throughout the 2 years, which also helped me for placements as well. And also, how can I forget my group, my friends? So if you are going into a college for MBA or any other degree, it is very important the people you are with, because these people will make your life much easier and will help you to survive the hectic days, sleepless nights, the night before exam. They will help you to survive all of this. So yeah, if you're going to a college, make sure you will get a good group. So thank you for watching this video. I hope you liked this video, and I hope I have covered most of the questions. Still, if you have any questions, drop them in the comment box and I will answer them. So that's all for today. I will come with another video soon. Till then, bye bye.